Hello students, welcome to the Nigam Educational. तो प्लेजेंट ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଇଭ କ୍ଲାस ଆମେ डिस्कस କରିବା मॉडल पेपर ସବୁ मॉडल सैंपल पेपर गुडाको शिवा कहउछंती जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग जूली क्वेश्चन गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग जूली गुड मॉर्निंग रॉकी क्वेश्चन प्रणाम अच्छा हो पिले टाइम तो हे गेलानी तो भोर भोर में भी बहुत कम पिला अछंती तो किछ नो आमे स्टार्ट करी हेबे तो मु स्क्रीन शेयर करछि पिले आ टाइम तो पळे आछि एग्जाम रो आ लास्ट मिनिट रे तो तमो रिवीजन टाइप रो फाइनल रिवीजन तो रिवीजन करि सर जब बस एबे हम गोटे प्रैक्टिस कर दबा एग्जाम पूर्व आ तुमको कहि देबी कि को टाइप रो सब आंसर्स लिखार अछि को टाइप रो तुम आंसर्स करिवो एग्जाम रे हैला जेडी एक्स आरबिस क्वेश्चन सर जानि परने ना देखि तो जानि परने ओके ठीक अछि पिले मु स्क्रीन शेयर करछि आई होप ठीक है सब सुबुथबो वॉइस तो काली आमे ए जाय टोटल तीनोटी हमरो सारी सारी चंदी तीनटा सेट ऑलरेडी हम कर सारछन पिले और चार नंबर सेटटा करबा ओके तो मु तुमको क्वेश्चन देबी क्वेश्चन दला पर तुम 10 सेकंड्स भीतर जल्दी जल्दी सब आंसर दबो हला हम तो पिला भी कम अछ हेबे तो चलिबो हम कहा पे वेट करबनी हम स्टार्ट कर दो तो फर्स्ट ग्रुप ए रो हम स्टार्ट करेबी ग्रुप ए रो स्टार्ट करबा ग्रुप ए रे जो फर्स्ट क्वेश्चन तुम आसीबो जोटा कि तुम आसुची जो एमसीक्यूज आसीबो प्रोज पोएट्री और स्टोरी ऊपर तो तार फर्स्ट क्वेश्चन देखो कोन कहछि करेक्ट ऑप्शन चूज करिवो तो क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहछि हाउ डिड द बॉयज एट एटन स्टैंड ड्यूरिंग द रोल कॉल टाइम रे पिले रोल कॉल टाइम रे सब एटन रो सब पिला केमे छिड़ा होतले ए देछि इन अ लाइन बी देछि इन अ क्यू सी देछि इन अ क्लस्टर डी देछि इन अ सर्कल जल्दी जल्दी आंसर दियो पिले कोटा ठीक हबो ठीक आंसर कोटा हबो पिले 10 सेकंड तुमको आंसर देबे मिलिबो कोटा ठीक आंसर हबो तो एटम कथा जेतु पिले कहिछि सेम केम छिड़ा होतले एटम देखो যদি আমি দেখিয়া পিলে जो लाइन हे कि जाउतले फाइल पास कर जाउतले सेटा होछि हेरो स्कूल बट एटी सेना होतले क्लस्टर गोटे ग्रुप रे छिड़ा होतले क्लस्टर तो सी धा ठीक आंसर यार हम सी होछ ठीक आंसर ओके तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि पिले नेक्स्ट क्वेश्चन देछि at what time did the grandmother relax for a while portrait of a lady क्वेश्चन एटा ओ समय रे माने से रिलैक्स करथिले ग्रैंडमदर ए देछि कोन इन द मॉर्निंग बी देछि इन द आफ्टरनून सी देछि इन द इवनिंग
D ଦେଇଛି at noon. କୋଉଟା ହବ ଠିକ ଆନ୍ସର ଦିଏ? सेकंड क्वेश्चन आंसर दे, सेकंड क्वेश्चन आंसर दे पहले कोटा ठीक हो. In the morning, in the afternoon, in the evening, at noon. कोटा हो. वो टाइम रे सेटी रिलैक्स करथिले. At afternoon. Sorry, हमर in the afternoon, no कि B. सी बार ओने पूछंती B एकदम ठीक. B दा ठीक आंसर. B. The next जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिस देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन ले देछि क्वेश्चन नंबर 3. कोन कहछि? Group work requires a thorough understanding of strength and weaknesses of individuals, irrespective of their dash. এটা তো আমার বুক লাইন দেখলে ম্যাজিক অফ টিম ওয়ার্ক কোশ্চেন কোড आंसर को ম্যাজিক অফ টিম ওয়ার্ক কোশ্চেন সেটা গ্রুপ ওয়ার্ক রিকোয়ার কোন করে a thorough understanding of strength and weakness of individuals irrespective of their dash. ऑप्शन देछि कोन देखो ऑप्शन देछि हायरार्की egotism, psychophancy, ना consciousness. What have ठीक आंसर? Question number 3. यार इधर आंसर देखिए पहले यार आंसर होगा कौन तुम्हारा hierarchy. 8 have ठीक आंसर. ना hierarchy हो भला hierarchy हो. Irrespective of their hierarchy. तांगर position को जो हम देखिए पहले group work requires thorough understanding of their strength and weakness of individuals. पूरे individuals रो कौन टा weakness अच्छी, कौन टा strength अच्छी. ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା ନା ହାୟରାର୍କି କୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଠି ପୋଜିସନ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ତ ଏଟା ହବ ଠିକ ଆନ୍ସର ଏ ହବ ଠିକ ଆନ୍ସର ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା ପ୍ଲେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ କହିଛି in the city the grandmother's happiest half hour was just city ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଟି ରେ ରହୁଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରଙ୍କର happiest half hour କୋଉଟା ଥିଲା A ଦେଇଛି reciting prayers, B ଦେଇଛି feeding the sparrows, C ଦେଇଛି sitting by spinning well, ना D ଦେଇଛି taking care of the writer. कोड आउट ठीक आंसर. शिवा पूछନ୍ତି कि feeding the sparrows. एकदम ठीक feeding the sparrows. ହେଲା ଘର ଚଟି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କଣ happiest half hour ଥିଲା ସିଟି ରେ ହେଲା ବଟ୍ ଭିଲେଜ ରେ କଣ ଥିଲା ଭିଲେଜ ରେ ସେ ଖାଇବା ଦଉଥିଲେ ଭିଲେଜ ଡଗ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା विलेज डॉग्स मन को दोखले खाए तो इट हाउ बी ठीक आंसर कोडा बी ओके बिले तो देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिस बिले नेक्स्ट क्वेश्चन कहला आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू सी अ गुड डील मोर ऑफ हिम हियर हिम रेफर्स टू डैश एटा त हमर आछे ऑन एग्जामिनेशन छो आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू सी अ गुड डील मोर ऑफ हिम What out ठीक आंसर जल्दी आंसर दियो A ଦେଇଛି Churchill's father, B ଦେଇଛି the headmaster, C ଦେଇଛି the English teacher और D ଦେଇଛି Ameri. What out ठीक आंसर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखो पहले कौन कहछि क्वेश्चन नंबर 5 तुम पचास तुमको क्वेश्चन नंबर 5 कहछि आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू सी अ गुड डील मोर ऑफ हिम तदी हियर हिम काहा को रेफर करछि हिम कहले कि एठी चर्चिल रो बापा ना हेडमास्टर ना तमरो इंग्लिश टीचर ना अमेरी सेटा अमेरी विषय कहछि हैला अमेरी विषय कहछि काने से माने परे जाय कि जो कोन कैबिनेट कलीग्स ही काम करथिले कैबिनेट कलीग्स ही काम करथिले तो एठी हेबो ठीक आंसर हो तमरो डी डी हेबो ठीक आंसर डी वॉइस ठीक से आसुने दिले ठीक है आंसर दे दो वॉइस आछि ना ठीक से कहना सकाल उठी क्लास कला को मते ठीक है प्रॉब्लम होछि वॉइस क्लियर सब तो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहला क्वेश्चन नंबर 6 द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल नीड मनी टू डैश एटा तम पूरा बुक रो लाइन थिले पूरा बुक रो लाइन एटा वार्म अप रे लिखा हितला इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल नीड मनी टू डैश मॉडर्न वर्ल्ड रे लोक मान को टंका आरो आवश्यक अछि टू डैश कोथ पई ए देछि हैव एक्सेस टू थिंग्स बी देछि बिकम रिच सी देछि मेक अदर पीपल ईट डॉट डी देछि grow well before it in strange terror what happened
जल्दी जल्दी आंसर दो. In the modern world, people need money to dash, have access to things, become rich, make other people eat dirt, now grovel before it in strange terror. तो ठीक आंसर के लिए हम कोड आएगा एटा have access things हैला एटा हम बुक रो लाइन हम वार्म अप रे देछि एटा देखि परिबो तुम. तो नेक्स्ट देछि कोन क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन कहला people are terrified of dash कोथ पाई लोक माने भय अछंती मनी को नै की ना मनी मैड मेन को नै की आ कोन ऑप्शन देछि देखिबा. नेक्स्ट ऑप्शन देछि collective money madness को कोन madness of mankind ना killing one another about it. कोड हाउ ठीक आंसर. ठीक आंसर कोड आपले को एटा हम डिस्कस करछंती तमरो मॉडल पेपर. ओके मॉडल सैंपल पेपर. तो मते को people are terrified of dash. People are terrified of dash. Money ना money mad man man ना तमरो C देछि कोन तो collective money madness ना D देछि killing one another about money. Ride the goat. क्वेश्चन जय जगन्नाथ आंसर दे पिले कोन हबो. तो यार आंसर पिले हबो कोटा जो कहि छि वेयर हां people are terrified of से एक्चुअली डरछन का को द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड. लोकन को पागलामी अछि टंका नै ताको हम भय करछु. देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो. क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहि छि देखो. क्वेश्चन नंबर 8 कहि छि टेलीविजन एक्चुअली बिकम्स अ हार्मफुल एडिक्शन फॉर चिल्ड्रन हु डैश. कहा पई तो टीवी टा मान टेलीविजन एक्चुअली बिकम्स अ हार्मफुल एडिक्शन गोटे खराब माने गोटे खराब अभ्यास पॉइंट हो जाए छुआ को पई. हु डैश हु डोंट वॉच इट ना हु वॉच इट ऑकेजनली ना सेल्डम वॉच इट ना वॉच इट टू मच. कोड हाउ ठीक आंसर. जूली क्वेश्चन डी हबो एकदम ठीक. जूली ठीक आंसर हबो डी. डी हबो ठीक आंसर. टू वॉच इट टू मच जेटा को बहुत देखिबो तार सेटा गोटे हार्मफुल एडिक्शन हो जिवो. ओके तो नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहि पिले. ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हबे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस करेज टू फेस एनी सिचुएशन. या भितर कोटा देखौची करेज टू फेस एनी सिचुएशन. क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए भितर कोटी देखौची करेज टू फेस एनी सिचुएशन. ए देछि कोन टेक हार्ट अगेन. बी देछि कोन हार्ट विदिन. सी देछि हार्ट फॉर एनी फेट. डी देछि स्टाउट एंड ब्रेव. एटा तमरो साम ऑफ लाइफ रो साम ऑफ लाइफ रो जल्दी जल्दी आंसर दियो. साम ऑफ लाइफ रो एटा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कोन आंसर. टेक हार्ट अगेन ना हार्ट विदिन ना हार्ट फॉर एनी फेट ना स्टाउट एंड ब्रेव हार्ट. कोड आउट ठीक आंसर. जूली क्वेश्चन डी हबो स्टाउट एंड ब्रेव. देखो एठी कोन कहै छी से कहै छी कि करेज टू फेस एनी सिचुएशन हला. तो एटा होछ तमरो सीटा हार्ट फॉर एनी फेट. जन हार्ट फॉर एनी फेट सी हबो ठीक आंसर. जे कौनसी परिस्थिति आसले मध्य ताको हमें सामना करिबो. ओके से कथा से कहूची. देन क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहै देखो. द एक्सप्रेशन द लिस्ट ऑफ गोटे के मार्क आसने हां बसिबो. द एक्सप्रेशन द लिस्ट ऑफ थिंग्स asleep upon a chair. द लिस्ट ऑफ थिंग्स एठी कहा को रेफर करूची. लिस्ट ऑफ थिंग्स पे कहा को रेफर करूची. क्वेश्चन नंबर 10 लिस्ट ऑफ थिंग्स कहा को रेफर करूची. एंजल को ना द सिक मैन को ना गॉड ना पीटर गिलिगन. कोड आउट ठीक आंसर. मन रखे पिले लिस्ट ऑफ थिंग्स कहले सदावर किए पीटर गिलिगन. निजो को गोटे क्षुद्रतम जीव बोली क्वेश्चन से छोट जीव बोली क्वेश्चन से माने एते बड़ सृष्टि रे मो जोटे छोट जीवटे गॉड मो ऊपर दया कले. तो लिस्ट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन हैला कि लिस्ट ऑफ थिंग्स से निजो क्वेश्चन डी है ठीक आंसर डी. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जे पिले. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहै छी. द होल आर्ट कैटलॉग वाज डैश. होल आर्ट कैटलॉग ता पिले कोन. द होल आर्ट कैटलॉग वाज डैश an amazing publication ना a photography for an early morning country road ना सी देची a computer manufacturing company
ना a film released in the mid 1970s. What our ठीक आंसर? Question number 11. एक क्वेश्चन आंसर को जल्दी. The whole art catalog was dash. The whole art catalog was dash. এটা ଗୋଟେ amazing publication. ए ହେବ ଠିକ आंसर. ए ହେବ यार ଠିକ आंसर. ओके? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोले? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोला देखो. What according to Steve Jobs was no big deal. Steve Jobs को कहवा अनुसार कोटा गोटे no big deal बोले से कहते. गोटे वर्ड से यूज करले no big deal. So the word यूज करले no big deal. देखिए आंसर की कौन दोजो. No big deal से कहाँ पे कहते प्लीज. What according to Steve Jobs was no big deal. His adoption, na his college education, na their finest creation, the Macintosh, and the 3 stories he told in his commencement address at Stanford University. कौन आओ प्लीज. तो इटा हाउ प्लीज D टा. D हो यार ठीक आंसर. D ହେଲା D हो ठीक आंसर. से कहले जस्ट 3 स्टोरीज. मु मात्र 3टी स्टोरी कहबी. बुझा नहीं. बेसी नो मात्र 3टी स्टोरी. तो এটা হবে D টা হবে ঠিক आंसर. देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देला चार्ली चैपलिन स्टॉप्ड सिंगिंग व्हेन डैश. चार्ली चैपलिन स्टॉप्ड सिंगिंग व्हेन डैश. केते बेले से गीत गाइबा बंद कर देले. चार्ली चैपलिन केते बेले गीत गाइबा बंद कर देले पिले. ए देछि कोन. ए शावर ऑफ मनी पोर्ड ऑनटू द स्टेज. जेते बेले स्टेज ऊपर टंका फोपड़ा वाला ना the stage manager left him alone on the stage. जेतेबेले स्टेज मैनेजर तांको एका छाड़ी के पळेले कोठी ना स्टेज ऊपर सेटा हबो ना आउट ऑप्शन देछि कोन. the stage manager helped him to gather money. जेतेबेले तांको टंका गोटे बारे स्टेज मैनेजर हेल्प कला सेतेबेले ना his mother asked him to stop singing. जेतेबेले तांको मां कहिले कि आउ गीत गाइबा आवश्यक नाही कहि. कोठा ठीक आंसर. जूली क्वेश्चन ए हेबो. जूली क्वेश्चन ए है आंसर. एकदम ठीक जूली एकदम ठीक. ए है ठीक आंसर. जेते टंका फोपड़ा स्टार्ट हला बा टंका लोक माने पूरा पूरी अजाडी देले तांको माने बहुत सारा टंका ऑफर करले फोपड़ले स्टेज ऊपर को. तो सेही समय से गीत गाइबा बंद कर देले आउ टंका गोटे लागिनी. ओटा होची ए है ठीक आंसर. एटा हो यार ठीक आंसर प्लीज. हैला. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जे पले कोन कहछि. नेक्स्ट क्वेश्चन कहला हाउ मच मनी डिड मॉडर्न मेकिंग्स पे एज कंपनसेशन for Hubbard's death. Hubbard रो डेथ बाबद को केते माने मनी केते टंका केते पाउंड्स मनी मो एंड मेकिंग्स कंपनी दा ऑफर करतला बन देतला हबर्ट्स रो डेथ को नहीं. एटा बहुत इजी. 100 पाउंड्स ना 200 पाउंड्स ना 150 पाउंड्स ना 250 पाउंड्स. कोटा ठीक आंसर. ठीक आंसर जल्दी दे देबले. कोटा हो शिवा क्वेश्चन 200 पाउंड्स. एकदम ठीक शिवा 200 pounds. C have a ठीक आंसर. Then देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि. नेक्स्ट क्वेश्चन ले देला what is described as a bolt from the blue. bolt from the blue कहां पे कहै छै. को bolt from the blue. ए देछि कोन. सी महाराणा मेडन स्पीच पे कहै छै. बी देछि कोन prolonged thunderous applause पे कहै छै. ना सी कोन देला. See Maharana description of the nobleman by देछि. ना झंडूस bouncing towards the window. कोड ऑफ ठीक आंसर. को जिनसे ପାଇଁ से क्वेश्चन दी कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. महाराणा को मेडन स्पीच ପାଇଁ ना तमरो प्रोलॉन्ग अच्छा प्रोलॉन्ग थंडर्स जो ताली मारतला जो से ता ପାଇଁ ना श्री महाराणा को जो कोन description of the nobleman ପାଇଁ ना झंडू bouncing towards the window. कोड ऑफ ठीक आंसर. सुभ्रांति क्वेश्चन दी कि सी हबो ना पिला देखो एठी कोन हबो. एठी तमर आंसर हबो डी. डी हबो ठीक आंसर. डी टा हबो ठीक आंसर पिले. झंडू आसला ना झरका पटु पळ आसला डेंकी आ कैप नै पळला तो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हैला. तो ये आंसर हबो डी टा. मन रखिबो एटा. डी हबो ठीक आंसर हैला. तो हमरो सरी गला प्रोज पोएट्री स्टोरी का क्वेश्चन सरी गला एमसीक्यू. देन से ग्रुप ए रे बान देखिबो ग्रामर क्वेश्चन सोल्व करे पिले.
तो देखो ग्रामर क्वेश्चन कौन देछि प्ले ग्रामर देछि the teacher advised me not to get addicted to television तो एटा डायरेक्ट स्पीच रे कहले कोन होबी क्वेश्चन कोन दला भलसे देखो कहूची क्वेश्चन 2 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहूची देखो कहूची the teacher advised me not to get addicted to television यार डायरेक्ट स्पीच रे कोन होबी यार डायरेक्ट स्पीच रे कोन होबो डायरेक्ट स्पीच रे कोन होबो जल्दी आंसर दियो ए कोन दला ए देछि the teacher said to me a teacher said to me not to get addicted to television B dala the teacher said to me don't get addicted to television out dala the teacher said to me why are you getting addicted D dala the teacher said to me you should not get addicted to television देखो एटी एडवाइस कहला ना बिले एडवाइस जेतु कहिची तो कोडा को don't get addicted to television हबो ना why are कोन why are you getting addicted to television habo na you should not get addicted to television habo comment section में जल्दी आंसर दियो गोटे मिनट तुम कमेंट देखा जाउनी एटा बहुत लाइव टी पछो चलछि टिके रिफ्रेश कर दोछि शिवा क्वेश्चन बी हेबो अच्छा कमेंट सेक्शन टिके टाइम रास नथला ओके देखो एटी कोन कहै देखो बिले एटी से कहला द टीचर एडवाइस मी टू मी नॉट टू कहला ना नॉट टू जेतु कहला एटा भी तमरो एडवाइस हे परियो डोंट गेट एडिक्टेड टू टेलीविजन एटा भी वन टाइप ऑफ तमरो कोन एडवाइस हे परियो डोंट गेट एडिक्टेड टू टेलीविजन तो बी हेबो तमरो ठीक आंसर देखो नेक्स्ट वन कहै बिले हां सुब्रांत एकदम ठीक आंसर एकदम ठीक देखो नेक्स्ट वन कहला व्हिच टेंस इज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच रो ने कोन को फॉर्म ता टेंस रो को फॉर्म ता indirect speech रे चेंज हबो नाही कोडा को सेकंड क्वेश्चन दा को आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 2 which tense form of the direct speech remains unchanged in indirect speech जल्दी आंसर देतले ए देछि प्रेजेंट सिंपल बी देछि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सी देछि प्रेजेंट परफेक्ट आउ तमरो डी दला पास्ट परफेक्ट कोडा हबो ठीक आंसर which tense form of the direct speech remains unchanged in indirect speech सुब्रांति क्वेश्चन ए देखो पिले कोची डायरेक्ट स्पीच को टेंस फॉर्म ता इनडायरेक्ट रे चेंज हेबन डायरेक्ट रो सबुडा को चेंज हे जाय इनडायरेक्ट रे बट जदा देखिए पास्ट परफेक्ट ता से मन चेंज हेबन ना जहा को से रहइबो डायरेक्ट थियो प्रेजेंट माने प्रेजेंट सॉरी कोन डायरेक्ट स्पीच रे थियो पास्ट परफेक्ट तो इनडायरेक्ट रे मते से पास्ट परफेक्ट रहइबो जो नहीं तो डी है ठीक आंसर डी है ठीक आंसर दिए ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहला if he had invited me कौन कहछि if he had invited me I would have joined the party the conditional clause is this in dash condition देखो को कंडीशन को देखो छी को एटा को कंडीशन को देखो छी
if he had invited me I would have joined the party जल्दी जल्दी आंसर दियो प्लीज देखो एटी कहिछि the conditional clause is in this sentence is dash condition को condition अछि real condition ना hypothetical condition ना unfulfilled ना zero real तो हबो निकले zero तो हबो नाही hypothetical और unfulfilled विषय को कोड हबो hypothetical और unfulfilled एटी देखो past perfect structure लागिछि if clause then would लागिछि have लागिछि then verb third form लागिछि तो कोड हबो ठीक आंसर जल्दी दियो बी अच्छा शिवा क्वेश्चन बी है वो एकदम ठीक हाइपोथेटिकल हे पर थांदा पिले बी ता ठीक हे पर थांदा जदी एटा कोइ थांदा जदी एटा कोटे इमेजिनेशन को देखो थांदा कोटे विश को देखो थांदा तो बी टा भी बोले कि ठीक हबनी बी ठीक हबनी एटा होची रियल एटा ठीक हम रियल माने कोन सबस मु कहबी जदी वर्षा हुए आमे प्लान टा कैंसिल कर दउ तो रियल देखोची जो टाइप 1 तमरो देन जदी कहि थांदे कोन कि जदी तमे पानी रे तेल पकाओ एटा भासे एटा जीरो रे पडुछ हमर बट हाइपोथेटिकल माने कोन सपोज मु कहि थांदी कि जदी मु ओटे चढ़े हे थांदी मु आकाश रे उड़ंती तो मु इमेजिन करूची तो सेटा होछ हाइपोथेटिकल हला एटा होची ओटे अनफुलफिल्ड कंडीशन बी हबो ठीक आंसर बी से कहछि इफ ही हैड इनवाइटेड मी जदी से मते इनवाइट करि थांता आई वुड हैव जॉइन्ड द पार्टी मु पार्टी जॉइन करि पारि थांती तो से मते इनवाइट करि नहीं कि मु तू जॉइन करिन ओटा कोन देखोची एटा ओटा अनफुलफिल्ड को देखोची अनफुलफिल्ड एक्शन को देखोची पास्ट रो हला कि पास्ट रे गोटे एक्शन टा हे पर नथला हला तो देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहछि देखो पिले ओबे माय ऑर्डर्स हां ओके मिनट पिले एक्चुअली ता ओके देखो कोन कहछि ओबे माय ऑर्डर्स आई विल हेल्प यू इन फ्यूचर जाने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग will be correct conditional sentence after the combination of these two sentence जदि हमें ए दुटा कोन दुटा सेंटेंस को कॉम्बिनेशन कर दबा मर्ज कर दबा ओबे माय ऑर्डर्स आई विल हेल्प यू इन फ्यूचर तो को कंडीशनल सेंटेंस ता ठीक हो एटा कोन देखो ए कोन दिछि ए दिछि बिले इफ यू ओबे माय ऑर्डर्स आई हेल्प यू इन फ्यूचर এটা তো জমা বি কোন দেখোছি গোটে ফ্যাক্ট ভলে জিনিস को দেখোছি মানে এটা তো ফ্যাক্ট নহ এটা তো এটি তুমি সে ইউজ করছি জিরোটা জিরো কন্ডিশন তো এটা হবন ঠিক বি কোন কইলা ইফ ইউ ওবে মাই অর্ডারস প্রেজেন্ট সিম্পল দলা আই উইল হেল্প ইন ফিউচার তো ফিউচার সাহায্য করিবি কইছি হেলা দেন আর কোন দিছো অপশন দেখো ইফ ইউ ওবেড কইলা আই উড হেল্প ইউ ইন ফিউচার ये भी ठीक नो इफ यू हैड अच्छा if you had obeyed my orders I would have helped you in future तो कोड हम ठीक आंसर को क्वेश्चन 4 एक्चुअली अब तमर सी टा माने एटा गोटे रियल जिंस को देखौछि बी टा तमर ठीक आंसर है बी हेबो ठीक आंसर बी टा इफ यू ओबे माय ऑर्डर्स जदि तमे मोर कोन कहबा मानुचो बा मोर आदेश को मानुचो आई विल हेल्प यू इन फ्यूचर मु तुमको फ्यूचर सहायता करी तो एटा गोटे रियल सिचुएशन को देखौछि तो बी हेबो ठीक आंसर बी हेबो प्ले ठीक आंसर हेला सत्य प्रकाश क्वेश्चन बी एकदम ठीक सत्य एकदम ठीक तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि प्ले क्वेश्चन नंबर 5 एटा हमें कोन क्वेश्चन प्ले जो प्ले भी जॉइन करछो जदि कि नवा प्ले अछन कहि दुछि एबे हमें मॉडल सैंपल पेपर डिस्कस करछो तमे तो प्रिपरेशन सरी थो तो एग्जाम पूर्व तुमको गोटे प्रैक्टिस कर दोछि कि एग्जाम रे तमे को टाइप रा आंसर दबो तमे केते दूर ठीक दे पाछो देखो प्ले क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5 देखो कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस फॉर द एक्टिव सेंटेंस they needn't wash these clothes again को सी कोन कहिछि एठी गोटे कोन दैछि गोटे एक्टिव सेंटेंस देछि तो या पई कोटा पैसिव टा करेक्ट हो यार पैसिव टा कोड हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर द कोन पैसिव सेंटेंस फॉर द एक्टिव सेंटेंस दैट नीड नॉट वाश दिस क्लॉथ्स अगेन
तो एई एक्टिव सेंटेंस पई कोटा पैसिव ठीक हो दे नीड नॉट वॉश दीज क्लोथ्स अगेन या पे कोटा ठीक हो सुब्रांति क्वेश्चन सी हो देखो कोन कोन कहि जाबे देखिबा से कहि छि पैसिव माने कोन बिले पैसिव माने ही तमरो भवर थर्ड फॉर्म हो तो सी कहि छि एठी दे नीड नॉट कहला दे नीड नॉट बी वॉश्ड दीज क्लोथ्स अगेन और कोन कहला दे नीड नॉट वॉश दीज क्लोथ्स अगेन और कोन कहि दीज क्लोथ्स कहला और कहला दीज क्लोथ्स कहि छि देखो दे तो प्रथमे हेबो ही नाही कहना पैसिव रे कोन होय पिले पैसिव रे प्रथमे आसीबो ऑब्जेक्ट तो दे तो सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट कोटा दिस क्लोथ्स तो होचे ऑब्जेक्ट तो एटा आगे आसे दरकार तो प्रथम दिका तो भूल हबो बुझा नहीं तो सी कोन कहला दिस क्लोथ्स कहि छि और नीड नॉट बी कहि छि वॉश्ड लागि छि अगेन कहि छि तो एठी देखो बी वर्ब लागिनी एठी बी लागिनी डी रो ऑप्शन रे नीड नॉट परे बी लागिनी तो डी टा मध्ये भूल हबो तो ठीक हबो सी हबो ठीक आंसर देखियो कि कोन ठीक देथिले सत्य क्वेश्चन सी सुभ्रांति क्वेश्चन सी एकदम ठीक सुभ्रांति सत्य एकदम ठीक आंसर देजो तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 in which of the following writings passive sentence are commonly used बस एटा गोटे बढ़िया माने मुझे तुमको पढ़ेला को कहथली तले मु तुमको पैसिव पढ़ेथली तो से समय या को मु कहथली तुम कोटा को which of the following writings passive sentences are commonly used कोच पाई पैसिव गुडा को यूज हो एक्टिव तो हम समस्त कथा कहन बट पैसिव ता कोट को क्षेत्र बेसी यूज हो ए कोन दला reports on experiment b कोन दला description of scientific process then कोन कहला official documents of rules and regulations then d कहला all of the above कोन हाउ ठीक आंसर क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी आंसर दे क्वेश्चन नंबर 6 आंसर कोन हबो देखो एटा ऑल ऑफ द अबव हबो सबुटा हम एटा यूज करू हला डी हेबो ठीक आंसर सुभ्रांति क्वेश्चन डी एकदम ठीक सुभ्रांति तो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर तमरा सिगला 6 हला 7 which of the following is the correct question to get the answer the giraffe एई आंसर टिक पाए को हेले को क्वेश्चन के पछरे पड़ियो ए दला व्हाट इज giraffe बी देछि व्हाट इज giraffe सी देछि which is the tallest animal और डी देछि which animal is the giraffe कोड हाउ ए बी सी और डी कोड हाउ को ए बी सी और डी आंसर आसे कोन द giraffe तो कोड हाउ ठीक आंसर सुगंध क्वेश्चन सी हबो एकदम ठीक सी which करछु which is the tallest animal नो कि which is the tallest animal कोड सबु कोन tallest animal कहछि तो सी हबो तमरा ठीक आंसर सी ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जे बिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोन कहछि क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहला बिले which of the following is the correct question for the statement grandmother tells our stories grandmother tells our stories पाई कोटा होची सठिक प्रश्न वो क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहला बिले which of the following is the correct question for the statement grandmother tells our stories या पे कोड हबो सठिक आंसर मन सॉरी सठिक प्रश्न कोड हबो who tells you stories ना who does tell you stories ना who told you stories ना who did tell you stories कोड हबो ठीक आंसर ऑप्शन ए बी सी डी ठीक आंसर कोड हबो which of the following is the correct question for the statement grandmother tells her stories सुगंध क्वेश्चन बी आप यो आंसर दोचो सत्य क्वेश्चन ए देखो बी एठी पिला बहुत कंफ्यूजन बहुत पिला एठी कंफ्यूजन हैला तो तुमको मु कहि दोछि जदि तमे सब्जेक्ट को नै के क्वेश्चन करछो सब्जेक्ट को नै तो सेठी डू डज डिड लागिवो नाही हैला बट तमे जो ऑब्जेक्ट को नै क्वेश्चन करछो देन सेठी डू डज डिड लागिवो तो एठी क्वेश्चन ता हु अछि माने सब्जेक्ट को नै कहि छि तो एठी कोन लागिवो हु डज टेल्स यू स्टोरीज कहले भूल हो बीटा भूल हो डायरेक्ट हम कहबा कोन हु टेल्स यू स्टोरीज मु एटा को तुमको इंटरोगेटिव पढ़ला को बुझी छि ए हेबो ठीक आंसर हैला ए हेबो तमर कोन ठीक आंसर जन सपोज मु कहबी रमेश टोल्ड मी द सीक्रेट तो मोटे एग्जांपल देके बुझे दोछि सो दैट तुम किछटा जानि परिबो सपोज मु कहबी कोन रमेश
told me the secret, told me the secret, suppose मैं ये कथाटा कहूँ हैला तो जदि मु कहबी कि मते सिक्रेट के कहला तो मैं कोन कहबी who who told you the secret, who told you the secret एटा हबो सब्जेक्ट पे क्वेश्चन क्या पे हबो क्वेश्चन टा हैला पर जदि मु कहबी what did रमेश tell you, what did रमेश tell you तो मु स्टोरी कोन सिक्रेट विषय रे पचाउची तो ऑब्जेक्ट हेगला तो जदि मु ऑब्जेक्ट को नै क्वेश्चन करबी ताले डू डज डिड लागिवो पर जदि मु सब्जेक्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन करची तो सेठी हमरो डायरेक्ट पूरा वर्ब लागिवो डू डज डिड लागिवो हैला याको मु बुझे सारथि तुमको जते मु पढौथली कोन इंटरोगेटिव तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया बोले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि क्वेश्चन नंबर 9 jaundice has dash in this town brought out carried out found out broken out कोड अब क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दियो jaundice has dash in this town कोड अब ठीक आंसर देखो brought out माने कोन सपोज कोई brought out माने होछ तमरो किछ ओड जिंस को रिवील करछ तम brought out कोछ हैला brought out carried out माने गोटे एक्शन ता जने की परफॉर्म करिछि तो कंप्लीट करछि गोटे टास्क हैला फाउंड आउट माने जानछ खोजी ओड जिंस खोजी पाइबो तम फाउंड आउट कोछ डिस्कवर करछ तको सत्य क्वेश्चन ए हेब आंसर अच्छा आउ की कोन कोछ आंसर को अच्छा आउट हां आउट हम कोन छै ब्रोकन आउट माने कोन गोटे जिंस हठात के स्टार्ट हो हठात के गोटे जिंस स्टार्ट हो त कोन क्वेश्चन ब्रोकन आउट तो कोन हो को जॉन्डिस हैज डैश इन दिस टाउन तो संग संग आरंभ हेतो ना गोटे स्प्रेड हेतो तो डी हेबो तमर ठीक आंसर हैला ब्रोकन आउट डी हेबो तमर ठीक आंसर डी ओके यार आंसर हेबो डी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोले शिवा क्वेश्चन डी एकदम ठीक शिवा एकदम ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोले कोन कहछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहला what does look forward to mean look forward to रो माने कोन बोले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला what does look forward to रो अर्थ कोन ए जो फ्रेजल वर्ब लागि कि माने look forward to यार अर्थ कोन हो ए देछि accept a duty b देछि accept a challenge c देछि expect with pleasure ना d देछि expect the unexpected कोड ऑफ द आंसर सत्य क्वेश्चन डी हेबो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड अच्छा आउ की कोन कहउछो जल्दी आंसर दे क्वेश्चन नंबर 10 आंसर कोन हबो व्हाट डज लुक फॉरवर्ड टू मीन अर्थ कोन बोले देखो एटा तमर हबो ऑप्शन सी हबो एक्सपेक्ट विथ प्लेजर एक मन रखिबो एक्सपेक्ट विथ प्लेजर तो सी हबो यार ठीक आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन देछि द मॉडल्स कहछि द मॉडल्स शुड एंड ought to आर यूज्ड टू डैश जो मॉडल्स डेटा देछि शुड और ought to एटा कोड में यूज होय एटा कोड में यूज हो ए देछि कोन गिव एन ऑर्डर द पई बी देछि कोन गिव एडवाइस द पई सी देछि कोन मेक अ रिक्वेस्ट करे पई ना तमरो डी देछि मेक अ सजेशन कोड आउट ठीक आंसर यार आंसर दियो द मॉडल शुड एंड ought to ए दिरेन से कोड पे यूज हुए ऑर्डर दे पई ना गिव एडवाइस पई ना सजेशन पई ना रिक्वेस्ट पई शुड और ought to सीधा क्वेश्चन सी है वो आउट की आंसर दोचो देखो एडवाइस दे पे यूज करबा एडवाइस पे यूज करबा बी है वो ठीक आंसर एडवाइस पे ought to और शुड को हमें एडवाइस पे यूज करती हैला जदी गोटे नॉर्मल सेंस से हमें दोछ एडवाइस तो सिटी हमें यूज कर परिबा शुड ता किंतु जदी अच्छा सीधा क्वेश्चन बी आंसर हां एकदम ठीक बी है वो ठीक आंसर कमेंट ता बदे लेट आछि ना ना ठीक अछि ओके आउ जदी हम देखिबा कोन ought to को हमें सेटर यूज करबा जदी कि गोटे अथॉरिटी हमको एडवाइस दोछ हैला याको मधे मो मॉडल स्कूल तरे नै गोटे लाइव क्लास करथि सेतरे मधे मो याको डिस्कस कर छै तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहै देखो आई एम नॉट अ डीप क्वेश्चन नंबर देखो कोन कहै आई एम नॉट अ डीप यू डैश स्पीक सो लाउडली एटा कोडा ठीक आंसर हो
I am not thief. You dash speak so loudly. यार आंसर कौन होगा? Needn't, mustn't, shouldn't, can't. जल्दी आंसर दे कौन कहछि? I am not thief. You dash speak so loudly. Needn't हबो ना mustn't हबो ना shouldn't हबो ना can't हबो. कोड हबो ठीक आंसर दी. मेहता पोछुंदी ए हबो. एकदम ठीक बुझन एटा हबो ठीक आंसर. ए हबो ठीक आंसर. हैला तो नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछ बिले? नेक्स्ट क्वेश्चन देछ हां एठी काहे कि नीडिंट कोन हला बिले? नीडिंट काहे कि आंसर ता कहलो? যদি আমি ଦେଖିବା ଦେଖ ମଷ୍ଟର୍ଡ କୋड ୟୁଜ କରିବା ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରୁଥିବା କି ତମେ ଏଟା କରନି କହି ହେଲା ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋହିବିସନ ଦେଖଉଛି ତମକୁ ମନା କରୁଛି କି ତମକୁ ଏଟା କରିବା ଉଚିତ ମାନେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ତ ନିଡିଂ ଟା ଏଠି ଠିକ ହବ ହେଲା ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଦେଖ ପ୍ଲେ କଣ କହିଛି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କହିଲା द पोस्टमैन डैश इट द पोस्टमैन डैश इट कोड आउट ठीक आंसर The postman does it. Edela isn't come it, hasn't come it, didn't come it, na hadn't come it. What a ठीक आंसर है. The postman does it. Isn't come, has not come, na didn't come, na hadn't come. मेटा क्वेश्चन बी है वो. मन रखियो येट लागला माने ही पास्ट सॉरी कोन येट लागुची माने ही तमे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करबो hasn't come हैला बी हेबो ठीक आंसर एकदम ठीक मेथड तो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर कोन देखि 14 क्वेश्चन नंबर 14 कोन दला देखो द thief dash the place before the police arrived there the thief dash the place before the police arrived there कोड हाउ ठीक आंसर यहाँ पे let now was living ना has left ना had left कोड अब ठीक आंसर जल्दी आंसर दे प्ले कोड अब the thief dashed the place before the police arrived there left ना was living ना has left ना had left मेथड क्वेश्चन डी had left एकदम ठीक had left ना ये पास्ट परफेक्ट यूज हो कोची द पुलिस अराइव्ड देयर अराइव्ड कहला मन कोन पास्ट सिंपल हे गेला तो ये दीटा एक्शन बिसरे कोची आ दीटा एक्शन पास्ट कंप्लीट ही सरछ जो नहीं मन कहै छै कोन गोटे एक्शन सरे पूर्व आउट एक्शन ऑलरेडी सरी सरला तो सापे हम यूज करबा हार्ड लेफ्ट मतलब जो एक्शन ता आगो सरी छै ता पे लिखिबो पास्ट परफेक्ट तो डी हेबो ठीक आंसर डी हेबो ठीक आंसर देन लास्ट क्वेश्चन तमरो ए सेट रा लास्ट क्वेश्चन ग्रामर रो देखिए कोन दै छै we dash on a picnic next Sunday. We dash on a picnic next Sunday. Code out ठीक आंसर. Go now are going now will go now will be going. Code out ठीक आंसर यार. Question number 15. We dash on a picnic next Sunday. Go now will go now are going now will be going. Code out ठीक आंसर. सुब्रत क्वेश्चन बी हेबो. आउ किन कहउछ जगदीश क्वेश्चन सी हेबो देखो वी गो तो जमा हबो ही नहीं एटा हैबिचुअल एक्शन नो विल गो विल बी गोइंग आर गोइंग जदि हम प्रैक्टिकली बिले कहबा एटा मु जो तो आनी ची जो क्वेश्चन सेट ता जो आनी ची जो सैंपल पेपर रो टेस्ट पेपर रो तो सेत्री जो तीनटा से ऑप्शन देछि आर गोइंग देछि विल गो देछि विल बी गोइंग देछि कहया गले तीनटा कर सेंस अछि हैला फर्स्ट नो फर्स्ट आइ परिबनी तो बी सी डी तीनटा कर मीनिंग अछि जदि हम ताकू कहबा तीनटा कर ग्रामेटिकल एरर नाही किंतु जदि हम लॉजिकली भाबिबा देन बी टा हबो ठीक आंसर कोन पाइ से नेक्स्ट संडे तान ऑलरेडी प्लान हे सारी छी ना ऑलरेडी जेहेतु प्लान हे सारी छी तो ता पे हम यूज करबा कोन आर गोइंग दा विल गो केतने थांदा सबसे इंस्टेंट संगे संगे डिसीजन नै थांदा जदि से संगे संगे डिसीजन नै थांदा तो विल गो टा बेसी ठीक थांदा हैला
ଆଉ will be going ଟା କଣ ଦେଖୁଛି ନା future ରେ ଗୋଟେ action ଟା ଚାଲୁଥିବ ତା ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। तो तीनटा যদি আমি ଦେଖିବା ଯଦି ମୁଁ କହିବି we are going on a picnic next Sunday এটা একদম ঠিক ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି we will go on a picnic next Sunday এটা ବି ଲଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ ଅଛି। ବୁଝଛ ନା ଏଟା ବି ଠିକ ହେଇପାରିବ। ଆଉ will be going ତ କଣ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଆମେ ଯାଉଥିବୁ ପିକନିକ এটা ବି ଠିକ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଅପସନ ଦେଇଛି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲଜିକାଲି ଭାବିବା ବি ଟା ବେଶୀ ଠିକ ହବ ବି ଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଟା ବି ଭୁଲ ହବନି ସି ଡି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ସେ ଅପସନ ଦେଖି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଦେଇ ଦେଇଛି କଣ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ସି ଆଉ ଡି ମଧ୍ୟ एकदम ଠିକ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଗ୍ରୁପ ଏ ର ପ୍ରୋଜ ପୋଏଟ୍ରି ଷ୍ଟୋରୀ ର ଏମସିକ୍ୟୁ ସରିଲା। ग्रुप ए रो ग्रामर रो क्वेश्चंस मध्ये हम डिस्कस कले। तो एबे देखिबा ग्रुप बी रे कोन क्वेश्चन देखो ग्रुप बी रे तो मु तमरो इंपोर्टेंट सब क्वेश्चंस तुमको ऑलरेडी मु दे सारतली प्रोज पोएट्री स्टोरी ऊपर तुमको मु क्वेश्चन दे देछि कोडा पढिबो कोडा नै जो बंद देखिनो वीडियो जाई देखि परिबो। आ ग्रुप बी रो हम डिस्कस करे एबे कोनटा ना तमर जो गुटे एक्सट्रैक्ट देथिबो प्रोज रो पोएट्री रो स्टोरी रो ता अंडर रे देथिबो एमसीक्यूज ताको एबे हम डिस्कस करबो हैला। तो देखिए कौन रही एक्सट्रैक्ट आम ए पढ़ी पार्बानी कहीं बहुत बड़ एक्सट्रैक्ट अच्छी तो आम डायरेक्ट कौन कर आंसर करवा देखिए क्वेश्चन कौन रही ओके देखो ये क्वेश्चन रही कौन इन हाँ इन व्हाट वे डिडंट द ऑथर वांट टू ट्रीट राम इन व्हाट वे डिडंट द ऑथर वांट टू ट्रीट राम as a good driver as a bad driver as a mere driver as an incapable driver कोटा वो ठीक आंसर थी ग्रुप बी रो प्रोज रो फर्स्ट क्वेश्चन एटा कोड आछि द मैजिक ऑफ टीम वर्क द मैजिक ऑफ टीम वर्क मेटा क्वेश्चन सी हबो as a mere driver से ताको माने कोन गोटे mere driver तमे को जो mere driver हिसाब रे कोन ट्रीट करे पे चाहू नथले तो सी हबो ठीक आंसर सी हबो एकदम ठीक आंसर। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर देला what did the author want ram to be author कौन चाहते author कौन चाहते what did the author want ram to be से राम को मान कौन से चाहते the best driver हिसाब रे ना an obedient driver हिसाब रे ना एक टीम लीडर हिसाब रे ना टीम प्लेयर हिसाब रे कोडा ठीक आंसर जल्दी आंसर दिया कौन हबो what did the author want ram to be the best driver an obedient driver a team leader na a team player सुभ्रांति क्वेश्चन डी मेटा क्वेश्चन डी एकदम ठीक डी है ठीक आंसर टीम लीडर नो टीम प्लेयर लगी टीम प्लेयर डी डी है ठीक आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तुम जानि छ तमर तीनटा प्रश्न देइथबो पैसेज अंडर रे क्लोज रो तो लास्ट क्वेश्चन देखो कोन कहला व्हाट डज शो अप मीन शो अप रो माने कोन जो व्हाट यूज हेतला शो अप तुमको देखे दोछ कोड अछि सेटा एठी देइथबो मे बी डाइविंग हां so for reaching okay this the phone calls simply read rather than sit in the car and wait for me to show up तो जो show up देछि बिले show up रो एठी मीनिंग कोन ए show up कथा से कहूची ए show up जो देला यार अर्थ कोन तमे कहबो हैला क्वेश्चन नंबर 3 show up यार आंसर कोन देखो what does show up mean show up रो माने कोन गगन क्वेश्चन सी देखो फर्स्ट देला arrive at a place बी कोन दला डिपार्ट फ्रॉम ए प्लेस एटा गोटे प्रेजेंट वर्ब ता सो ऑफ ता यार मीनिंग कोन हो को सो द वे ना फाइंड द वे कोडा ठीक आंसर जल्दी आंसर दियो जोटा लागो छ तुमको जोटा सब न भी आसुची बट तुमको एग्जाम रे आंसर देबार अछि ना तो एठी कमेंट सेक्शन आंसर दियो कोडा ठीक आंसर व्हाट डज सो ऑफ मीन सो ऑफ रो माने कोन अच्छा के आंसर दो ना देखो arrive at a place depart from a place show the way find the way show up माने कोन हम कहि परबा arrive at a place कहि परबा एटा मन रखियो arrive at a place ओके तो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कहा पोएम देइस देखिबा पोएम देइस हमर एटा
मनी मैडनेस ओके हाँ मनी मैडनेस ऊपर पॉइंट देछि मनी मैडनेस रो पॉइंट देछि तो देखियो तार एमसीक्यूज कोन देछि तो देखो कोन देछि तार एमसीक्यूज फर्स्ट कोन दला पिले व्हाट डज ईटिंग डॉट इम्प्लाई कोन करछि व्हाट डज ईटिंग डॉट इम्प्लाई व्हाट डज ईटिंग डॉट इम्प्लाई ईटिंग स्टेल फूड बी देछि ईटिंग कोन कंटेमिनेटेड फूड ना बिकम चेयरलेस ना सफरिंग इंसल्ट कोड आउट आंसर जल्दी आंसर दे पिले कोड ठीक हो व्हाट डज ईटिंग डॉट इम्प्लाई कोन इम्प्लाई करछि पिला क्वेश्चन बी हेबो देखो जब एटा कहूची ईटिंग डॉट मतलब देखो डॉट रो माने ही होची कोन जन को इंसल्ट करबो नो कि ईटिंग डॉट रो माने नो कि तुमको किछि गुटे असना इंसल्ट खाइ दिया होची हैला तो एटा हो डी टा हो ठीक आंसर सफरिंग इंसल्ट हैला ईटिंग डॉट जन को तुम सब अपमान तो करछो तारा फेसे कहूची देन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखो हम कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द पोएट नॉट मेंशन इन द लिस्ट of things to be free को जिनसे से फ्री करे पे कहि नहांती या पे पैसेज देछि हम से पैसेज रो क्वेश्चन को डिस्कस करछन कोडा ठीक आंसर ब्रेड शेल्टर फायर तो से कहछन फ्री करे पे तो क्लॉथ विषय से कहि नहांती तो बी हेबो ठीक आंसर हिना क्वेश्चन बी एकदम ठीक है ना एकदम ठीक नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहै देखो what according to the poet would happen if we don't bring an end to our madness for money what according to the poet would happen if we don't bring an end to our madness for money यार आंसर कोन हो ए देछि कोन people would kill one another b देछि कोन people won't have wealth and prosperity C dela kono there would be no misery to human race D dela kono the essential commodities will be free to all कोड अब ठीक आंसर है जदि आमे हमर पागलामिड को न छाड़ीबा देन कोन हवा मस्ते अच्छा मेटा क्वेश्चन ए एकदम ठीक ए वो ठीक आंसर पीपल वुड किल वन अनदर अबाउट मनी हम परस्पर को मारिबा आरंभ करबा बुझा नहीं यदि हमें मैडनेस को हम न छाड़ीबा देन परस्पर को हमें हार्म करबा तो ए हेबो तमरो ठीक आंसर तो एटा हमर पॉइंट सरी गला एबे देखबा स्टोरी देखिबा स्टोरी पार्ट कोन देछि क्वेश्चन स्टोरी पार्ट पडिछि स्टे हम स्टे पुलिस ओके स्टोरी पडिछि कोठु स्टे हम स्टे पुलिस पैसेज ता देछि तो देखिबा ता पे क्वेश्चन कोन देछि बिले ता पे क्वेश्चन कोन देछि देखिबा एमसीक्यूज First, Job's biological mother felt very strongly that her child should be adopted by Dash. Steve Jobs को जो biological mother थिले से strongly चाहूଥିଲେ कि ताको छुआटा की adopt करिवो गोटे caring parents ना गोटे rich parents ना college graduates ना ordinary people कोटा ठीक आंसर जल्दी लिखो एटा बहुत इजी मेटा क्वेश्चन सी कॉलेज ग्रेजुएट्स एकदम ठीक सी है वो ठीक आंसर सुगंध भी क्वेश्चन सी एकदम ठीक सी है वो तुम्हारा ठीक आंसर तो देखिबा नेक्स्ट कोन कहै छिले नेक्स्ट कहला लुकिंग बैक इट वाज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हु थॉट दिस एटा के भाबुथिले कोन कहै देखो लुकिंग बैक it was one of the best decision who thought it obviously the tankor chapter कौन है आंसर स्टीव जॉब्स नो कि स्टीव जॉब्स ए हे ठीक आंसर तो पिले हमरो हमें टोटल 38 मार्क्स एमसीक्यूज कर देले 38 मार्क्स एमसीक्यूज हमें कर देले प्रोज पोएट्री स्टोरी ऊपर 23 टा एमसीक्यू लेबे आउ जो 15 एमसीक्यू ले हमें ग्रामर ऊपर डिस्कस कर देले हला तो एबे देखिबा डिक्शनरी स्किल्स ओके डिक्शनरी स्किल्स कोन देख देखिबा
अच्छा डिक्शनरी स्किल टिके कंफ्यूजिंग देछि माने जेतु पीडीएफ टा अछि ना तो एपट सट हेक अछि तो चलिबो हम गोटे गोटे करे बुझिबे त हैला डिक्शनरी स्किल टा देखिबा कोन देछि तो वर्ड देछि कोन ऑक्युपाई ऑक्युपाई देछि वर्ड टा तो से वर्ड रो देखिबा प्रथमे पांचटा मीनिंग देछि तो वर्ड रे पांचटा मीनिंग प्ले देला देखिबा कोन कोन देछि ओके देखो फर्स्ट देछि ऑक्युपाई यूज अ प्लेस फॉर्मला यूज अ प्लेस कहछि गोटे गोटे प्लेस को व्यवहार करे बोली कहछि ते नेक्स्ट कोन कहला बी इन कंट्रोल ऑफ प्लेस गोटे प्लेस को कंट्रोल करबा देन नेक्स्ट कोन कहछि देखो नेक्स्ट कोन कहला नेक्स्ट कहछि हाफ जॉब और पोजीशन गोटे जॉब को और पोजीशन को देखौछि देन नेक्स्ट कोन कहला पहिले कीप समबडी बिजी जन को बिजी रखिबा व्यस्त रखिबा देन कोन कहला रेगुलरली थिंक अबाउट समथिंग गोटे जिनस विषय रेगुलरली भाबिबा तो एटा ऑक्युपाई रो मीनिंग देला आरो मीनिंग देला ऑक्युपाई रो हैला देन देखियो तार सेंटेंसेस कोन देछि सेंटेंसेस देछि मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑक्युपाई पोजीशंस ऑफ पावर इन द कंट्री एटा कोन हो आंसर एटा कोन हो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑक्युपाई पोजीशंस ऑफ पावर इन द कंट्री कोटा ठीक आंसर को एटा गोटे पोजीशन को देखौछ ना बुझन ऑक्युपाई पोजीशन तो कोन गोटे तमर देखौछि जॉब बा पोजीशन को देखौछि जॉब बा पोजीशन देखौछि तो आई रे कोटा हो सी हो तो कोन हो हमर सी हो ठीक आंसर खुशबू कोछंती सी एकदम ठीक सी हो ठीक आंसर तो देखियो नेक्स्ट कोन दैछि नेक्स्ट डिक्शनरी स्किल कोन ला देखियो कहछि द प्रॉब्लम हैज बीन ऑक्युपाइंग मी ऑल वीक जनी द प्रॉब्लम हैज बीन ऑक्युपाइंग मी ऑल वीक प्रॉब्लम टा टोटल वीक सारा कोन माने मते ऑक्युपाई करि रखिछि बोल कहला तो कोन हो कीप समबडी बिजी ना रेगुलर थिंक अबाउट समथिंग ना तमरो यूज अ प्लेस ना बी इन कंट्रोल ऑफ प्लेस कोड हो ठीक आंसर तुम लागछ को द प्रॉब्लम हैज बीन ऑक्युपाइंग मी ऑल वीक अच्छा मेहता कहउछंती कि ई हेबो एकदम ठीक ई हेबो से गोटे जिंस को बारंबार भाबुची टोटल वीक सारा से कोन माने भाबु तारी विषय ऑक्युपाई करछि से प्रॉब्लम ना तो ई हेबो तमरो ठीक आंसर एना हो ई हला ई हेबो ठीक आंसर तो देखिबा नेक्स्ट कोन दैछि नेक्स्ट कहला द रीजन वाज क्विकली ऑक्युपाइड बाय फॉरेन ट्रूप एटा कोन हो फॉरेन ट्रूप द्वारा से जगह रे कोन करला ऑक्युपाई करला द कंट्री विषय कहउछि तो कोन बटा द द रीजन वाज क्विकली ऑक्युपाइड बाय फॉरेन ट्रूप एटा कोन हो ठीक आंसर को हम ऑलरेडी दिट आंसर सरी छि एटा भी पढि छि हमर रेगुलर थिंक अबाउट समथिंग एटा भी सरी छि हमर तो गोटे अछि कीप समबडी बिजी आउट अछि यूज अ प्लेस ना बी इन कंट्रोल ऑफ अ प्लेस देखो कोन कहले एठी से कहै छि सेठी कहै छि कोन द हां द रीजन वाज क्विकली ऑक्युपाइड बाय फॉरेन ट्रूप तो ताको ऑक्युपाइड करा गेला माने कोन ताको ऑक्युपाइड करा गेला गोटे जगह को आउट माने फॉरेन ट्रूप बा विदेशी सैन्य मान द्वारा ऑक्युपाई करा गेला ताने कोन होटा कंट्रोल ने गेला से प्लेस कंट्रोल ने गेला बी हेबो ठीक आंसर एटा हमर बी हेबो ठीक आंसर प्ले हैला बी हेबो ठीक आंसर तो देखिबा यार आंसर कोन दबो बी ओके तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन माने नेक्स्ट कोन दला सेंटेंस टा नेक्स्ट सेंटेंस दला ऑल द सीट्स इन द बस वेयर ऑक्युपाइड ऑल द सीट्स इन द बस वेयर ऑक्युपाइड सबु सीट गुडा को ऑक्युपाइड ही सेल्स आई भी कोडा को फोर्थ यूज अ प्लेस एटा हो यूज अ प्लेस जो नहीं सबु गुडा को यूज ही सारी बा समस्त सब लोक बस सारी तो ए हेबो ठीक आंसर यार ओके रहला ए ओके नेक्स्ट कोन दला आई नीड सम मनी सर कोन सॉरी अछि कोन आई नीड सम वे टू ऑक्युपाई द किड्स फॉर एन आवर मते किछिटा वे दरकार किछिटा माने कोन जिंस दरकार जेंति कि मु कोन करबी छुआ गुडा को गोटे घंटा जाय ऑक्युपाई कर रखी तो एटा कोन हो कीप समबडी बिजी छुआ के जेंति बिजी रखी ए कहै छै डी हेबो यार ठीक आंसर डी हेबो ठीक आंसर क्लियर ओटा ला तमरो एटा थला ए एटा थला तमरो डी तो हम डिक्शनरी स्किल मध्य डिस्कस कर देबी हैला ओके
तो एबे आछि देखो आ मु तुमको मु पिले कहि दउची तमे जो मन को राइटिंग एजेंट ठीक से हे नाही तो तमे गोटे काम करो तमे राइटिंग ऊपर मु ऑलरेडी सब वीडियो आनि सारिची एग्जाम को जिया पूर्व टिके भलो भाबे देखि दिबी हला अच्छा प्राइस ऑफ पोल्यूशन अच्छा प्राइस ऑफ पोल्यूशन ठीक अछि प्राइस ऑफ पोल्यूशन रो एबे हम क्वेश्चन टा डिस्कस करदा बोले प्राइस ऑफ पोल्यूशन जेमति कि तमरो देइची कोथरे हां पिले एटा गोटे देखो बहुत पिला एटा कंफ्यूज होंते मु तुमको कहि दउची नोट मेकिंग रे से देइची कोन ना मेक नोट्स इन आउटलाइन फॉर्म इन 120 टू 150 वर्ड्स कि एटा टोटल एटा भूल प्रोसेस एमती कुछ क्वेश्चन पड़िबो ही नहीं से कहबोनी तुमको कि 120 टू 150 वर्ड्स लेख कर तुम थोड़ा इमेजिन कर ना जदि तुमको माने गोटे पैसेज देथिबो 120 वर्ड्स 120 वर्ड्स से तुम गोटे पैसेज से देछि आ से तुम कहबो 150 वर्ड्स नोट्स बना केन पॉसिबल एटा एटा पॉसिबल ही नो तो एटा जो टाइपिंग करछन सीएचसी वाला भूलभाल करछन तो तुमके खाली कहथिबो कि तुम नोट्स बनाओ आउटलाइन फॉर्म में हला आ नोट मेकिंग ऊपर मध्य मु वीडियो आनि सर्च करी देई ताको देखि दो केमती कोन नोट मेकिंग करिवो हला तो देखिबा माने प्राइस ऑफ पोल्यूशन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर प्राइस ऑफ पोल्यूशन ठीक अछि तो प्राइस ऑफ पोल्यूशन ता को एबे हमें डिस्कस करबा अच्छा प्राइस ऑफ पोल्यूशन गला करे प्राइस ऑफ पोल्यूशन अच्छा एठी अछि ठीक है एपर सब ठीक अछि देखिए कोन देछि देखो आगो पढि दबा आगो टिका पढि दबा तापर हम आंसर दबा हला देखो कोन कहछि एक्सट्रैक्ट पढि दबा हमर जहां क्वेश्चन पैटर्न देछि ता आंसर जदि हम देखिबा से हम कहिछि कोन एक्सट्रैक्ट देथिबो सिंथेसिस बोली कहिछि एंड ता अंडर रे पांचटी क्वेश्चन देथिबो 5 मार्क्स रो आ तुमको वन लाइन आंसर देबार अछि आ काली भी लाइव क्लास में कहिथिलि जो सब आंसर लिखिबो पूरा कॉपी पेस्ट कर दबन कॉपी पेस्ट करले माने भूल हो जो टाइप रो प्रश्न पचाछि तुमको सेही टाइप रो ही उत्तर देबा पड़ी बुझ नहीं प्रश्न जो टाइप रो अछि उत्तर तुमको सेही टाइप देबा पड़ी आ वन लाइन रो आंसर लंबा चौड़ा बेसी लिखियार नहीं हम हैला तो देखिबा कोन देछि टेक्स्ट some people are fighting back किछ लोक फाइटिंग बैक करछंती इन जापान रेसिडेंट्स हैव टेकन देयर कंप्लेंट टू कोर्ट जापान रे किछ लोक कंप्लेंट नै जाइथिले कोर्ट को नै छंती एंड सेवरल हैव ओन किछ लोक जिति भी जाइछंती इन वन रिसेंट केस एबे कार गोटे रिसेंट केस रे ए कोर्ट गोटे कोर्ट कोन कहछि ना ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देथिला द हैंसन एक्सप्रेसवे पब्लिक कॉर्पोरेशन to pay 65.5 billion yen to group of 18 people who lived near the BC highway. जो 18 जन लोक जो कोन ना बीजी हाईवे पाखे माने रहउतले तांको गोटे क्षतिपूर्ण बाबद को 65.5 मिलियन देबा पई कहथिला yen हला and they argued that their high incidence of chronic bronchitis and asthma was caused by exposure to the car emission and factories near their homes तो कथा होछ कोन से आर्ग्यू करथिले जो माने कोन कैंसर होछ कोत पई ना जो एक्सपोजर होची कार एमिशन कार धुआं बाउची आ फैक्ट्री जो सब धुआं बाउची हैला तो सेति पई ताको आत्मा होची आ कैंसर होछ बोल से कहथिले तो आर दिस साइन ऑफ टाइम्स परहैप्स नॉट एल्सवेयर द रीजन फॉर द मोमेंट तो से कोछ एटा कोन गोटे संकेत आसी गलानी बुझा नहीं कि कोन बट इवेंचुअली इंडियंस एंड अदर एशियंस may find that it will be cheaper to reduce air pollution now rather than to pay for its nasty ill effects तो से कोची एशियन माने को पई बा इंडियन माने को पई कोन लेट वार्निंग टाइप रो तो तांको हाथ रे एबे समय अछि जब से चाहबे याको ठीक कर पारिबे नले ता परे तांकर हेल्थ नष्ट हो हैला तो एटा से कहै छै एटा तो याको नै हम देखिए क्वेश्चन आंसर केन कोन करबा अब बारंबार कोच बिले कॉपी पेस्ट जमा करबन जो टाइप रे क्वेश्चन देछि ताको से टाइप रे आंसर देब पड़िबो बुझा नहीं जो टाइप रो क्वेश्चन से टाइप रो आंसर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन दला व्हाई डिड सम रेसिडेंट्स इन जापान फाइट बैक कोन पई जापान रे किछिटा रेसिडेंट्स फाइटिंग बैक करथिले कोन पई पिला कोन करते एठु पर लिखि देबे सम पीपल आर फाइटिंग बैक इन जापान रेसिडेंट्स हैव टेकन देयर कंप्लेंट्स टू कोर्ट सेवरल हैव ओन ए टाइप रो करिवो नाही एमते लिखियो नाही क्वेश्चन देछि कोन क्वेश्चन देछि कि कोन पई से माने फाइट बैक करथिले जाने फाइट बैक से माने कोड पे करथिले तो जदि हम देखिबा तार आंसर त कोड मिलियो देखिबा देखो फाइटिंग बैक से माने एतपई करथिले काइना ताकर कहले थले कोन से माने आर्ग्यू करथिले कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा एटा तांको होची
कोथपाई ना कार एमिशन पाई और फैक्ट्रीज नियर देयर होम एटा हबो आंसर तमरो तो याको आमे केंद्र लिखिबा लिखिले याको लिखिबा सम रेसिडेंट्स इन जापान फॉट बैक नो कि देखो क्वेश्चन अछि डिड लागिस माने तुमको पास्ट सिंपल आंसर देबो पड़ी तो तुम कोन लिखिबो सम रेसिडेंट्स इन जापान फाइट बैक देछि तो कोन हिबो फॉट हिबो जो नहीं फॉट बैक इस लोक माने कोन विरोध करछन बिकॉज़ व्हाई लागला इट व्हाई लागिस कोन लिखि देबो बिकॉज़ लिखि देबो नले आज लिखि देबो बिकॉज़ लिख सला पर कोन लिखिबा हम तापर हम लिखिबा बिकॉज़ कोन हाँ तब लिखि परिबो बिकॉज़ दे सेड सन कोहंती बा आर्ग्यू करंती दैट देयर हाई इंसिडेंस ऑफ chronic bronchitis and asthma was caused by car emissions and कोन factories near their homes एम लिखिबो हैला तो नेक्स्ट देखिए कोन कहछि व्हाट वाज द कोर्ट ऑर्डर कोर्ट कोन ऑर्डर देथिला व्हाट वाज द कोर्ट ऑर्डर देथिला एटा क्वेश्चन देछि तो पिला कोन भूल करिवे पिला कोन लिखिबे पूरा डायरेक्ट लिखि देबे इन वन रिसेंट केस ए कोर्ट ordered the central government and the Hansen expressway जहां भी देछि तो पिला कॉपी पेस्ट कर दे तो तुम कॉपी पेस्ट करिवोनी याको लिखियो को टाइप रो लिखिबो क्वेश्चन कोन दला व्हाट वाज द कोर्ट ऑर्डर देछि तो दे कोन लिखिबो द कोर्ट ऑर्डर्ड द कोर्ट लिखियो कोन द कोर्ट ऑर्डर्ड इडी लगे दो पास्ट अछि ना द कोर्ट ऑर्डर कोन ऑर्डर देथिला का ऑर्डर देथिला ऑर्डर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैंसन एक्सप्रेसवे पब्लिक कॉर्पोरेशन टू पे 65.5 million yen to a group of 18 people एंड लिख परियो शॉर्ट आंसर दो वाला की बेसी लंबा चौड़ा आंसर दबार नहीं एनटा वन लाइन आंसर तुम क्वेश्चन से कहिथिबो कि एटा वन लाइन आंसर कहिथिबो देखो एठी लिखिछि वन लाइन और वन सेंटेंस आंसर तुमको सेही टाइप में लिखेर अछि अधिक लिखबार नहीं हला तो देखिबा नेक्स्ट कोन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले कोन कहला इन व्हाट सिचुएशन व्हाट प्ले okay कौन कहला in what situation would Indians and Asians pay for the nasty ill effects of air pollution eta कोन हबो in what situation would Indians and Asians pay for the nasty and ill effects of air pollution eta रोड क्वेश्चन देला तो केते तांको माने पे करे पड़ियो बा तांको पावण देबो पड़ियो इल इफेक्ट्स खराब इफेक्ट एयर पॉल्यूशन खराब इफेक्ट पाई जदि से माने न मानुछन कोनटा जदि से माने पॉल्यूशन को न कमुछन ताहले जो नहीं तो यार आंसर कोन हबो तो इजे देछि कोन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन जदि हमें एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस न करिबा एटा होछ तार आंसर ता जदि हमें रिड्यूस न करिबा ताहले हमको कोन देबा पड़िबो गुडे खराब इफेक्ट को सामने करे पड़ी देन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दला देखो व्हिच क्रोनिक डिजीज डिड पीपल ऑफ जापान सफर फ्रॉम को क्रोनिक डिजीज ता को लोक माने सफर करछन कोटा को डिजीज गुडा कथा से कहिछि देखो आंसर कोन दबो पिला कोन करिवे पिला एम लिखि दंती कि दे आर्ग्यू दैट देयर हाई इंसिडेंस ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड asthma was caused by exposure ए सब इनसे लिखिया नहीं पर लंबा लंबा सेंटेंस लिखिया नहीं से कोइछ वन लाइनर तो सिंपल आंसर होची एटा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और कोन कोइछ अस्थमा ब्रोंकाइटिस और कोइछ अस्थमा ए दिटा तम दबो आंसर सब लिखिया नहीं बिल कोइ सब लिखिले भूल हो हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ग्रुप how many members were there in the group who were to be paid compensation of 65.5 million yen अच्छा केते लोकन को क्षतिपूरण देबार थिला यार आंसर कोड पाइबो देछि 18 कोन देछि 18 देछि ए ग्रुप ऑफ 18 पीपल 18 जन लोक तो तुमको आंसर सेम लिखियर अछि तुम आंसर मते सेम लिखिबो कॉपी पेस्ट करिवोनी बारंबार कोच बिले कॉपी पेस्ट करिवोनी हला तो कोन लिखिबो लिखिबो there were लगी कौन अच्छा कौन how many members were in the group who were to be paid देखियो there were 18 people to be paid compensation of 65.5 million yen
ए टाइप तुमको आंसर करिवार अछि तो एटा तमर सरी गला प्राइस ऑफ पोल्यूशन रो क्वेश्चन देन देखिबा वोकाबुलरी स्किल तो वोकाबुलरी स्किल देखियो कोन दैछि वोकाबुलरी स्किल कोन दैछि देखो अच्छा जस्ट पात्र क्वेश्चन 18 एकदम ठीक तो देखो कोन कहिछि बिले find words phrases in the extract in question number 8 which have the following meanings ये तीनटा मीनिंग देछि तो मीनिंग 1 मीनिंग 2 मीनिंग 3 काई को वर्ड ता हबो तुम खोजर अछि कोटू से पैसेज भीतर तो फर्स्ट देखो कोन कहिछि फर्स्ट कोला द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी इज यूज्ड इन जापान जापान रे गोटे स्टैंडर्ड यूनिट ता यूज होउची मनी जापान रे तो तार ताको कोन कहउछना कोड आउ तार जो हमें क्वेश्चन yen yen एठी गोटे वर्ड हो देखो yen हला तार आंसर कोड हबो yen करेंसी को देखो मुद्रा को देखो है ओके तो नेक्स्ट देखिए कौन देखिए तो एटा हला तमरो तो नेक्स्ट कौन कहछि लो प्राइस कॉस्ट कंपैरिजन टू अदर्स लो प्राइस और कॉस्ट कंपैरिजन टू अदर्स एटा कोन होबो देखियो या पे कोड हबो लो प्राइस को कम प्राइस कहछि कम दर विषय कहछि कंपैरिजन टू अदर्स अन्य मान को अपेक्षा तो देखिबा यार आंसर कोन हबो सम पीपल आर फाइटिंग बैक इन जापान केस अच्छा देखिबा आंसर कोन हबो ordered central government enhancing competition but eventually Indians and other cheaper देखो यार आंसर कोडा cheaper सस्ता सस्ता कहछि लो कहला ना cheaper हबो ठीक आंसर कोडा हबो cheaper एटा तोर आंसर ओके तो एटा तमरा cheaper एटा तमरा कोन cheaper ओके तो नेक्स्ट देखिबा आउट कोन देछि टू रेजिस्ट और अटैक गुड जिंस को रेजिस्ट करबा अटकेबा बा अटैक करबा ता पे कोन हबो ता पे कोन हबो या पे खोजो टू रेजिस्ट और अटैक या पे को वर्ड हबो जंगो माने अटकेबा नो कि देखिबा ए पे कोन कहछि अच्छा एते पूरा मोर मिलले देखो कोन कहछि फाइटिंग बैक एटा होछि फाइटिंग बैक कहछि यार आंसर हो फाइटिंग बैक विवेक क्वेश्चन गुड मॉर्निंग विवेक गुड मॉर्निंग एटा तमर कोन फाइटिंग बैक ओके तो हमर सरी गला एटा वर्ड मीनिंग हम खोज देल तो एबे देखिबा आउ दीटा क्वेश्चन कोन कहछि use the following expression कोन कहछि देखो use the following expression in sentence of your own तुम निजे जाको सेंटेंस करियो अब पिला कोन भूल करन पिला भूल करन दे या कि सेन पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देन तुम पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दोचो आनी कि पूरी तो पैसेज ता देथिबो जो एटा देथिबो सेटू कॉपी कला एटा भूल हो से कहछि सेंटेंस ऑफ योर ओन तो निजे सेंटेंस बनेयो पिल हला तो दला इंसिडेंट्स प्रथम कोन देछि गुटे वर्ड इंसिडेंट्स आ मु को समझते गुटे सेंटेंस देखो मु कहबी ठीक अछि ना भूल अछि इंसिडेंट्स को नेकी गुटे सेंटेंस देखो इंसिडेंट्स एई वर्ड को नेकी गुटे सेंटेंस देखो कमेंट सेक्शन में समस्त आंसर दियो जोन सब देखो विवेक जस्क मेहता सर्वेश्वर जोन सब अच्छा समस्ते मेसेज करो इंसिडेंट्स को नेकी गोटे सेंटेंस करो वेट करछो 10 सेकंड्स देखो कि कोन आंसर दोचो इंसिडेंट्स को नेकी गोटे सेंटेंस मेकिंग करो कमेंट सेक्शन लिखो अच्छा ठीक ठीक अछि देखो जदी सपोज अच्छा कोन कहले इट इज डिफिकल्ट अच्छा ना डिफिकल्ट नो बिले तुमको एटा करे पड़ियो हां बहुत पिला भूल कोन करंती ना कॉपी कर दियन एठु डायरेक्ट तुम कॉपी करबे नाही आ पिला कोन करंती एमते लिखि देबे कि आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ इंसिडेंट्स लिखि देबे आई कांट मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड इंसिडेंट्स तो तुमको ए भले भी लिखिया नाही हला इंसिडेंट्स रे कोन करियो तो देखो एठी तुम कोन करिवो सपोज मु कहबी इंसिडेंट्स नो कि
तुम जो चाहिए डायरेक्ट भी तुम मान स्टार्ट कर पारिबो कोठो इंसिडेंट्स टू हम जो स्टार्ट कर नाउन हिसाब रे सपोज मैं कहबी द इंसिडेंट्स ऑफ मैलेरिया नो कि मैलेरिया जो इंसिडेंट्स अछि पिले तो अच्छा की कोन आंसर देलो अच्छा हिना कोछंती समथिंग रॉन्ग मेटा क्वेश्चन इट इज डिफिकल्ट तो एटा एमती कले एमती आंसर के दोछ मु कहली याको देखि सेंटेंस करो एग्जाम तुम लिखियर अछि अच्छा सुभ्रांति गोटे लिखिले द फायर इंसिडेंट्स ऑकर्ड लास्ट नाइट हां वेरी गुड एकदम ठीक सपोज मु कहबी द कोन द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रेन सीजन रे कोन हुए ना मलेरिया टा बेसी बढ़ी जाय याको मदन कोइ परिबा अच्छा से सेम टाइप रो इथि कहलो नास्टी नेस्टी बा गुड इल इफेक्ट्स को देखौची याको नै गुड सेंटेंस लिखि कर जो वर्ड ला नेस्टी यार सेंटेंस लिखि कर अच्छा ठीक अछि पिलान करू नांदी सपोज मु कहबी द सिटी इज सफरिंग कोन फ्रॉम द नेस्टी इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन एम कह परिबो द सिटी इज फेसिंग नेस्टी इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एम कह परिबो तमे एठु टिके हेल्प नै परिबो कोनते हेल्प नबो देखियो को टाइप रो वर्ब टेक्स्ट यूज करछन नाउन हिसाब रे यूज करछन ना वर्ब हिसाब रे यूज करछन ताको पूरा डायरेक्ट कॉपी करबोनी बट से टाइप रो लिख परिबो जदी न आसुची तो हला से टाइप रो लिख परिबो किंतु आंसर छाडी आसे नै हला ओके तो ठीक अछि तो आमे आज आ गोट सेट मध्ये डिस्कस कर देले टोटल आमे कोन डिस्कस करले पिले आमे डिस्कस करले आमे डिस्कस करले एमसीक्यूज रोज पोइंट शो एमसीक्यूज डिस्कस करले देन आमे आउ कोन डिस्कस करले नेक्स्ट आमे डिस्कस करले तमरो ग्रामर हां ग्रामर को मध्ये आमे डिस्कस करले देन तमरो प्राइस ऑफ पॉल्यूशन रो क्वेश्चंस डिस्कस करले आउ देन आमे डिक्शनरी स्किल मध्ये करले ठीक अछि तो ठीक अछि एबे टिके रेस्ट नै जाओ जदि हेबो आउ आधा घंटा पर आउट लाइव नै आसीबी कहना मते लागो बहुत प्लस होई छथि जे उठी ना हम 4:15 क्लास नउथले अच्छा हिना कोछंती देयर इज अ नेस्टी स्मेल इन हियर तक ठीक लागो इन हियर लगे ना खाली हियर लगे दियो हैला ओके ठीक अछि थैंक यू ऑल मु पुणी आउथन लाइव आसीबी ट्राई करछि टिके आधा घंटा पर जे हो आमे आसीबा आधा घंटा 45 मिनिट्स पर आउ तापे तो मु आगु आउ किछि बे अपलोड करबी ना डायरेक्ट लाइव पळेछि हैला देन हम आउ गोटे स्टार्ट कर दबा आउ गोटे प्रैक्टिस कर दबा से आउ एबे कहि दोछ बिले जो माने सपोज रिपोर्ट राइटिंग को नहीं कंफ्यूज अछ कि रिपोर्ट राइटिंग केमते लिखिबी देन मु तुम कहबी सिंपली जाओ द निगम एजुकेशनल एप्लीकेशन रे गोटे नोट देछि मु 8-10 प्रकार नोट दिया हिची माने फॉर्मेट सब दिया हिची को क्वेश्चन पड़तले को टाइप रे तमे फॉर्मेट यूज करबो हैला ताकू ही तमे पढी पळाओ जहां भी क्वेश्चन आसीबो सेही फॉर्मेट रे लिखिबो आ आंसर भलो हबो दोस्तो हैला तो ठीक अछि प्ले आ टिके सन पर पुना लाइव आसीबो ओके थैंक यू ऑल थैंक यू